Hey there, this is Katha. Today we are going to learn anatomy of larynx. This is part 1 of the larynx video. So, in this video, we are going to see the introduction, situation, like basic introduction and cartilages. In the next video, we will see the muscles and ligaments. Larynx. First, what is larynx? Larynx is the voice box. Okay. So, introduction, it's an organ for production of voice or phonation. Air passage, it's the part of the air passage which allows the two-way flow of gases. Acts as a sphincter and at the inlet of lower respiratory passage. So, I think you understood this is just the basic. Let me show you it in a 3D model. So, this is the larynx, this is trachea, this is thyroid cartilage, this is cricoid cartilage. This all we will see in the video. Okay, so basically this is larynx. See, from here till here is larynx. So it's the part of the respiratory passage which allows two-way flow of gas, that is while inspiring and while expiration, like with two-way flow of gases, and it's the organ for production of voice. Next, situation and extent. Larynx lies in the anterior midline of neck, extending from the root of tongue to trachea. Okay. In adult male, lies in front of cervical vertebra 3 to 6, and in children and adult female, it lies little bit above, that is in front of C1 and C4. Now, the size of the larynx. In male, it is a bit longer than females. So in males, it is 44 millimeter or 4.4 centimeter, and in females, it is 36 millimeter. Internal diameter, up to 3 years, it is 3 millimeter. Adult, it as the age advances, it grows bigger and wider, so the diameter also increases. So up to 3 years of age, it is 3 millimeter, and then gradually at the adult time, it is 12 millimeter in diameter. Now, constituents of larynx. This is from here the main part starts. Constituents of larynx is a skeletal framework of cartilages. Cartilages are connected by joints, ligaments and membrane and moved by muscle. So it is basically consisting of cartilages. It's nothing but cartilage. It doesn't have any bony part. So the cartilages are connected by joints, ligaments and membranes and muscles. Now let's begin with the cartilages. So there are 9 cartilages in the larynx. There are 3 unpaired and 3 paired. 3 paired means total 6, and this 3 unpaired means single 3. So total will be 9. Now what are the 3 unpaired cartilages? Thyroid, cricoid, epiglottis. When you see it in a 3D model, like when you actually see the larynx, then you will not have to make efforts to remember. Okay, आपको ऑटोमेटिक ही याद रह जाएगा जब आप उसको देखोगे. And 3 paired are arytenoid, corniculate and cuneiform. So let me show you it in a model. So this is our larynx, and whatever you are seeing, this is the thyroid cartilage, this is cricoid cartilage. So this is what is epiglottis. It looks like tongue only. It's actually a leaf-like structure. So it is also a single cartilage, so it is unpaired. This thyroid is also single, so it's also unpaired, and cricoid. And 3 paired ones are the smaller ones. See, whatever you see, this is the arytenoid cartilage, the small pyramidal structures, and above that only smaller ones are the corniculate cartilage, and in front of them these ear pods, looks like AirPods. So they are the cuneiform cartilage. So this is corniculate and this is arytenoid. So you got it. 3 paired are the smaller and lies posteriorly, and the main bigger ones which you see are the 3 unpaired cartilage. So this is epiglottis, thyroid and cricoid. This cricoid is complete ring-like structure. So it is unpaired, and 3 paired are arytenoid, corniculate and cuneiform. Let's move back. First, the thyroid cartilage. It's a V-shaped in cross section consisting of right and left lamina, which are quadrilateral. Okay, let me first read it and then I will explain you. Anterior borders approach each other at an angle of 90 degree in male and 120 degree in female. So this angle which you see, this is thyroid angle, which is 90 degree in male and 120 degree in female. Means in female it would be like wider bit. So it is not very much prominent in female, but in male it is prominent as Adam's apple.
Then lower part of median projection forms the laryngeal prominence. That's what I said just now. And upper part do not meet and form thyroid notch. See this upper part don't meet and they form this thyroid notch. This is thyroid notch. Posterior borders form superior inferior cornua or horns. Okay, see this part. These are two horns, superior and inferior horns, bilaterally. Superior cornua is connected to hyoid bone through thyrohyoid ligament. Very easy. See, larynx is actually easy. You don't have to make efforts to remember it because जो पार्ट का जो कनेक्टेड है वही दोनों चीज का नाम उसमें आएगा. सुपीरियर कॉर्नुआ हायोइड बोन से कनेक्टेड है तो सुपीरियर लाइक थायराइड कार्टिलेज हायोइड बोन से कनेक्टेड है तो थायरोहायोइड लिगामेंट. इंफीरियर कॉर्नुआ क्रिकोइड कार्टिलेज से कनेक्टेड है थ्रू क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट. आउटर सरफेस एज अ ऑब्लिक लाइन extending from superior thyroid tubercle to inferior thyroid tubercle. Very easy. See this prominence are you seeing? That is the oblique line. This oblique line is important. It gives an attachment to three muscles that we'll see now. So it starts from superior tubercle. See, there's something like tubercle kind of thing here. So they are just telling as a tubercle, thyroid tubercle. So it extends from superior thyroid tubercle to inferior thyroid tubercle. Attachment. See, this is what I was telling. Attachment: thyrohyoid, sternothyroid and thyropharyngeus part of inferior constrictor muscle. Okay, this is thyroid cartilage. Okay, this is thyroid cartilage, and the oblique line. This was the oblique line somewhere. So it gives attachment to three muscles. This is thyrohyoid, this is sternothyroid, and this is inferior pharyngeal constrictor or thyropharyngeus part of the inferior constrictor. Sternum बीच में होता है, so you can remember sternothyroid. Sorry, it's connected to thyroid cartilage. So obviously sternothyroid. Sternothyroid बीच में होगा, फिर hyoid ऊपर है तो ऊपर की साइड मतलब little bit anteriorly, and पीछे inferior constrictor, pharyngeal muscle. Okay. So thyropharyngeus part of inferior constrictor muscle. Now इसमें कुछ याद नहीं रखना है, like you can imagine and remember it. So thyrohyoid, sternothyroid and inferior constrictor or thyropharyngeus part of inferior constrictor. Now attachments of the thyroid ligament as a whole. Lower border of inferior cornua gives insertion to cricothyroid. Okay, अभी आप इसको भी logically समझ सकते हो. अभी inferior cornua gives attachment to cricothyroid. See, this muscle is a cricothyroid muscle. पूरा. It is triangular in shape. See, ऐसा triangular होता है और वो थायराइड और क्रिकॉइड के बीच अटैच करता है तो क्रिकोथायरॉइड. सिंपल. So lower border of inferior cornua gives insertion to cricoid. Okay, जिस नाम लास्ट में आता है उधर वो इंसर्ट होता है जाके. So you can remember this way. क्रिकोथायरॉइड तो क्रिकॉइड से शुरू होकर थायराइड पे एंड होगा. So it is तो थायराइड कार्टिलेज पे उसका क्या होगा? इंसर्शन होगा. So okay, cricothyroid. Posterior border gives insertion to palatopharyngeus, salpingopharyngeus and stylopharyngeus. Okay. This is thyroid cartilage in front. अब हम उसे पीछे से देखें तो हमें कुछ मसल्स दिख रहे हैं. फर्स्ट इज मिडल pharyngeal constrictor, palatopharyngeus और ये साइड वाला stylopharyngeus. इधर वही लिखा है palatopharyngeus, stylopharyngeus और salpingopharyngeus. तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा. नाउ ऑन द इनर एस्पेक्ट, मतलब थायराइड कार्टिलेज ऐसा है. अभी हम ये बाहर से ऐसा देखते हैं, अभी हम उसको अंदर से देखें इस ये वाले पार्ट में तो क्या दिखेगा? 3 लिगामेंट्स और 3 मसल्स. मीडियन थायरोएपिग्लोटिक लिगामेंट, वेस्टिबुलर फोल्ड और वोकल फोल्ड, ये 3 लिगामेंट्स हैं. और थायरोएपिग्लोटिक मसल, थायरोएर्टिनॉइड मसल और वोकैलिस मसल, ये 3 मसल हैं. तीनों मसल पेयर्ड है और लिगामेंट्स में मीडियन थायरोएपिग्लोटिक लिगामेंट सिर्फ अनपेयर्ड है और वेस्टिबुलर फोल्ड और वोकल फोल्ड पेयर्ड है.
ओके, सो मैंने ये एक्चुअली जिस तरह वो प्रेजेंट है ऐसे ऊपर से नीचे उस तरह लिखा है, वरना आप उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं कि 3 लिगामेंट्स हैं, मीडियन थायरोएपिग्लेटिक लिगामेंट, वेस्टिबुलर फोल्ड एंड वोकल फोल्ड, एंड मसल में थायरोएपिग्लेटिक मसल, थायरोआर्टिनॉइड मसल एंड वोकैलिस मसल। सपोज दिस इज थायरॉइड, अब हम उसको अंदर से देखें, सो सी दिस इज एपिग्लॉटिस, लेट मी रिमूव इट, जस्ट रिमेंबर। अभी इधर एपिग्लॉटिस है तो उसको मसल सा अटैच करेगा थायरोएपिग्लेटिक मसल, और कैन यू सी दिस इज क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, और आपको वो ठीक है मैं बाद में दिखाती हूँ। सी दिस इज थायरोएपिग्लेटिक लिगामेंट, और ये जो दिख रहा है 2 लाइन्स टाइप, दिस इज दिस 2, 1 and 2, these are vestibular and vocal fold. Vestibular fold ऊपर होता है, vocal fold नीचे होता है। ओके, वेस्टिबुलर लिगामेंट ऊपर, वोकल लिगामेंट नीचे। अभी वेस्टिबुलर का ई पहले आता है, वोकल का ओ बाद में आता है, तो यू कैन रिमेंबर दैट वे। सो देयर आर 3 लिगामेंट्स, कौन से थायरोएपिग्लेटिक, वेस्टिबुलर फोल्ड और वोकल फोल्ड। एंड मसल में कौन सा देखा था, थायरोएपिग्लेटिक मसल, थायरोआर्टिनॉइड मसल, सी दिस इज थायरोएपिग्लेटिक मसल, दिस इज थायरोआर्टिनॉइड मसल, ये जो कैन यू सी दिस, यही तो है आर्टिनॉइड कार्टिलेज, उसमें उसको और थायराइड कार्टिलेज को कनेक्ट करता है थायरोआर्टिनॉइड मसल। ओके ओके, सो वी सॉ थायरोएपिग्लेटिक मसल, थायरोआर्टिनॉइड मसल, और एक मसल था वोकैलिस मसल, यस। अभी वोकैलिस मसल ये सी दिस, इट ऑल्सो कनेक्ट्स थायराइड कार्टिलेज टू आर्टिनॉइड। ओके, दिस वन इज द वोकैलिस मसल, ये हम पीछे से देख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ना। ओके, नाउ थायराइड कार्टिलेज इज डन।